बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो ये जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे तुम्हारे इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जो तुम्हारा दूसरा इंटरव्यू है, राइट? जी जी। इंशाल्लाह ये दूसरा फाइनल इंटरव्यू है। अच्छा, तुमने इनको बता दिया था ना कि तुम्हें वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी? उनको पता है ना, राइट? मैंने बताया नहीं था क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जर्मनी में नहीं हूँ, तो मुझे हाँ चाहिए ही। हाँ, सही, ठीक है। तो वही इकराम की तरह तुम भी इसी तरह जाओगे। देखो, तुम्हारे दो चीज़ हैं। तुमने एमएससी डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस जो किया हुआ है, ये बहुत काम कीमती है। और साथ साथ जो तुमने कोर्सेज पढ़े हुए हैं, ये बहुत कीमती हैं। तुमने इसके ऊपर बात करनी है। नाउ अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उमैर, याद रखना कि तुमने बहुत मेहनत करनी है और तुमने एक एक कोर्स को पी जाना है, ठीक है? अगले 5 महीनों में जुलाई के एंड तक मैं बहुत कीमती कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ। जी जी। तो तुम्हें एक एक कोर्स को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए एक एक कोर्स को, ठीक है? तो प्लीज, मैं देखिए ना, अभी तो मार्च के बाद अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, जुलाई है। तो जुलाई के एंड में 31 जुलाई को मैं 5 नए कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग है, और उसके अंदर मैं कोड्स की एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटोकॉल्स की सब चीज़ें बताऊंगा। तो तुमने उन्हीं तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन उसमें 8 जो हैं, 7-8 जो हैं वो कमर्शियल टूल्स हैं, और 10-12 जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो ओपन सोर्स टूल्स हैं, मगर वो एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, राइट? जो कि जी जी। आमतौर पे सारे दुनिया में हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि तुम्हें इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराई जाए कि तुम्हें कोई मसला ना हो, राइट? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें तुम्हारा काम अच्छी तरह आता हो। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो तुम मसला होगा तुमको, ठीक है? तो जी प्लीज़, जी। अच्छा, तुम्हें पढ़ते रहना है, तुम्हें कॉर्ड्स की सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और तुमने डेटा साइंस भी जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ साथ जो सना पढ़ा रही है ना, वो भी तुम सारी पढ़ लो। बेशक तुमने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, मगर ठीक तुमने है। फिर भी उसमें पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, जी मैं जी। तुम्हारे जल्दी से हम स्क्रीन शेयर करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है? ताकि तुम्हारा ये इंशाल्लाह एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए तुम्हारी। सो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर मेरे पास। जी जी। एक है, इन्होंने जो भेजा था ना, कि जिसके जी अंदर स्किल सेट्स हैं, क्या है? अच्छा, एफईएम सॉफ्टवेयर का पूछे, बोला भाई मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं यूज़ कर सकता हूँ, जी। इंशाल्लाह। ठीक है? माइक्रो कंट्रोलर्स, बोलो भाई मैंने माइक्रो कंट्रोलर्स जो है ना, सिमुलेटर्स बहुत इस्तेमाल किए हैं, आई हैव यूज्ड मेनी सिमुलेटर्स, but just as so that uh, you know uh, all microcontrollers, they are pretty similar. It comes down to what kind of operating system they're running, right? uh, I can utilize all the available tools at my disposal basically, to exploit the vulnerabilities out of those microcontrollers, ठीक है? तो ये जी जी। बता देना, just before we start, I mean, I just wanted to let you know that about the FEM software, of the microcontroller software. I didn't mention anything specifically, but I do know about all of these things, ठीक है? टूल्स बताओ, बोलो भाई, there are more than 120 tools I've used, ठीक है? जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाए हैं, सब कुछ ना, जो उसमें आ रहे हैं। But I've mentioned some of the notable ones like Jupyter Notebook, RStudio, Wireshark, Security Onion, Sabati, Parrot OS, Hadoop. Parrot OS in itself has more than 200 tools, right? Which are जी जी। predominantly used for penetration testing, for firmware testing, for microcontroller testing, for all those kinds of things, right? And जी you जी। can hack into, you can find vulnerabilities, you can hack into any applications, be the, you know, if like whether they are like web applications or network applications or protocols or whatever the case is, right? Okay. जी And then the Spark, Hive, Irwin data modeler, these are the things. And GitHub, I have a GitHub repository when I maintain all those things, so on and so forth, right? Languages में तुम बता दो कि I'm very proficient in Python, R, C plus, C plus plus, C, C sharp, PHP, whatever the case is. If you can give me anything, I can certainly look into it and find vulnerabilities out of it, so on and so forth, right? Bus जी जी। protocols के बारे में तुम बताओगे भाई, like the DNP3, OPC Classic, Profinet, Modbus. These are one of the predominant SCADA protocols, right? But जी I जी। know that you mentioned something about VY protocols for the Volkswagen wireless protocol, or the UDS protocol. Those are diagnostic protocols, right? So जी I जी। can certainly find vulnerabilities. If my job is to find vulnerabilities into those protocols, I can certainly do that.
मैं कर सकता हूँ, जी, जी। ठीक है? That is not difficult, ठीक है ना? That is not difficult. I'm here to help you. I'm teaching you right now. मैं लास्ट कोर्स उसका बना रहा हूँ, एंड इकराम इज देयर एज वेल, तो तुम्हें तुम्हारी हेल्प हो जाएगी पूरी, ठीक है? जी, जी, अच्छा, इंशाल्लाह। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में ट्रेलो एंड जेरा है, बोलो दीज आर द प्रीडोमिनेंट टूल्स आई हैव यूज्ड, बट व्हाटएवर द टूल्स आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आई कैन सर्टेनली डू इट, राइट? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो रोल है, यही तुम्हारे सीवी के अंदर भी है। जी, मेरे जी। ख्याल से वो गालिबन तुम्हारे इसी डॉक्यूमेंट को उठा के बात करेगा, और सीवी में से कुछ चीजें उठा सकता है, हम देख लेंगे। बट जी, यहाँ जी। पर यही है कि अगर मैं इसको सीवी में तुम्हारे जाके देखूँ, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो रोल तुम्हारा था, ठीक है, उसमें तुमने जो काम किया है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी है। बोलना भाई मेरा रोल था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो सॉल्यूशंस हैं उनको असेस करूं। माय रोल वाज टू असेस द सॉफ्टवेयर, असेस द एप्लीकेशंस, फाइंड vulnerabilities in them, devise policies and procedures around them, recommend security controls around them, ठीक है, and also perform IT risk assessment in terms of finding vulnerabilities, in terms of finding risks that needs to be mitigated, so on and so forth, right? So pretty much the difference I see here and there, like in my past role and in my future role, if given the opportunity, is that I see that Alton works in multiple sectors. Those are industrial, manufacturing. जो तुम Alton की जरा देख लेते हैं वेबसाइट क्विकली, ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस में काम करता है, so that जी, जी। हम उसको recommend कर सकें ना. It's a big engineering group, and you guys are leaders in outsource engineering. So if any organization who wants to outsource their features, स्क्रीन शेयर नहीं है बस में। नहीं, मैं इसकी वेबसाइट पे देख, ओह! ठीक अच्छा। है? हाँ, मैं उधर नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ। जी, जी। तो मैं उसको देख के बता रहा हूँ कि भाई, I know that you guys are pretty big when it comes to IoT, when it comes to autonomous driving, when it comes to machine learning, deep learning, because these are the areas where most of the outsourcing will happen. This is the area where most of the business process re-engineering will have, BPR, right? Will happen. जी, जी। And I know that you guys are into that business because I've seen your services, so on and so forth. जैसे इनकी सर्विसेज में अगर जाओ, तो सर्विसेज में इन्होंने लिखा है कि भाई what they offer is engineering R&D. So, whether it is innovation and digital transformation, product design and development, or manufacturing engineering, or supply chain and quality, or or is it whether it is consulting or application development or testing, or whether it is infrastructure, network security, cloud. In all of these areas, I've played a role. ये याद रख लेना, ये प्लीज याद कर लेना, ठीक है, ये जी, स्टेटमेंट। जी। In all of these areas, I've played a role. And how I see this is like the past experience will supplement me uh, in at Alton. If given the opportunity, I will certainly prove myself to deliver value, whether it is whether if it is R&D, research and development of new solutions, new products, new processes, new policies, new procedures, whatever the case is, or whether it is IT and network services. Because I come from a unique background where I, in the past, I did used to work for basically, uh, an ISP, internet service provider. So there you have to develop expertise in infrastructure, in cloud, and networks and security. So I had that unique opportunity of working over there, right? And then I also did a lot of courses, from Annafe. You can mention that, which is the premier institute when it comes to cybersecurity. जी, I जी। did my CSSP, Certified Information System Security Professional. I did my ISO 27001, which is the standard followed for securing, whether it is infrastructure or cloud or networks or security, of data. That is the standard that we follow globally, and it is widely followed even in Germany and around Europe. That's the global de facto standard. Okay? हुँ, I also know very well about 27019, which is predominantly for SCADA industry, specifically for electrical grids. I also have hands-on experience in 27017 and 27018, which is for cloud security and cloud privacy, right? So whether it is threat intelligence, incident response, whether it is performing digital forensic exercises for threat hunting, whatever the case is, right? I come from a unique background that I have done all of these areas, right? This is how you have to mention. सही है? जी। So try to make sure कि you write it down, you लिख लो and memorize कर लो, because this is your last shot.
You have to जी, give it अच्छा। all you have. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में गए, तो उन्होंने पहले सहाबा को तैयार किया, सब कुछ किया, खड़ा किया, लाइनें बनाई, सबकी पोज़ीशंस बनाई, ठीक है? और उसके बाद फिर वो दुआ माँगने के लिए खड़े हो गए और फिर उन्होंने बड़ी दुआ माँगी। इतनी दुआ माँगी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आ जाएँ, हम थक गए हैं। आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। मैंने कहा नहीं। सो वर्क हार्ड इज़ द सुन्नह एंड देन जी, जी। मेक दुआ इज़ द सुन्नह। यू कांट बिकम लाइक मुतवक्किलून जिसको अबू बकर सिद्दीक ने मारा था कि मस्जिद में जी, बैठ के जी। कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, राइट? सो बैठे नहीं रहना है, ठीक है? वो तुम्हारा जो दोस्त है ना केमिकल इंजीनियरिंग वाला, वो अल मुतवक्किलून में से जा रहा है। हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ उसको। तो तुम्हें उसको मेहनत करनी है। उसको भी हम यहाँ डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको कुछ दिखाए तो सही ना वो। जी, 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 जी। कुछ दिखाए तो सही ना। मतलब अगर कुछ दिखाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, तो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा, ठीक है? मैं एक सर्टेन लिमिट तक तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। उदखुलल इंटरव्यू तक। उदखुलल जॉब जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है। दखलल जी, जॉब अल्लाह बेशक। के जाओ भई, जाओ जॉब पे जाओ तुम, ठीक है? सही है? तो तुम्हें उसके लिए करना है। एंड देन यू हैव टू मेंशन कि देखो भई I've seen that you guys are, your key areas are consulting, uh, and basically expertise, in customer support, and you guys like, you have a wide area, right? And this whole wide area, the full technological coverage, I can certainly provide my consulting and my assets, because this is the kind of company I've been looking for, where I am able to enjoy working on different clients. So if you जी, put me on a client for a few years, I will certainly play my part. Once I'm done, and you see that Umair, you can play, Muhammad can play another part on another customer, then certainly I can go there. So I see Alton as an Accenture or IBM of basically, of Europe, right? That's what I want to see, and I see that there's a great potential in there. So that's why, if given the opportunity, I can certainly do that. Now, वो पूछे कि तुमने क्या काम किया था सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर अप्लाइड कंप्यूटिंग में, अप्लाइड ये कॉम्पास पोल्ट्री में। बोलो कॉम्पास इज अ बिग ग्रुप, and they have many, basically it's a big, it's in the agricultural sector right now, and they have like ये कंपास वही है ना जिसके बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं। जी, 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 जी। हाँ, ये बड़ा ग्रुप है। आई थिंक एबटाबाद में एबटाबाद में ही हमारे घर है, तो वहाँ पर ना उनके पोल्ट्री फार्म्स मैंने देखे हैं, दूर से नज़र आते हैं, लाइन से बने हुए। जब रात को लाइट्स ऑफ होती है ना पहाड़ों में, नज़र आते जी, हैं जी। लाइनों से बने हुए। तो कंपास एक बड़ा ग्रुप है। तो बोलो भाई इट्स अ बिग ह्यूज ग्रुप। आई थिंक इट्स अ मल्टीनेशनल ओन्ड बाय समवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड। बट तुम बता देना कि इट्स अ बिग ग्रुप, एंड my role was basically working at the enterprise level, ensuring that the organization from top down is secure and compliant when it comes to software, when it comes to applications, when it comes to web interfaces, when it comes to networks. That was my role, right? So they were developing applications, they were developing in-house applications. Sometimes proprietary applications were being used, sometimes bespoke applications were being used, right? And I was using CIS top 20 controls, ISO 27001, 27017, 27018, and 19 to get all my work done, right? So it was, I mean, I'm a good storyteller. ये तुमने बताना है, ठीक है? I'm a good जी, जी। storyteller. So if given the opportunity, I can certainly help the customer and then incorporate all the findings in a beautiful story that I can tell them, right? It's going to be a mesmerizing story. You have to tell them. मैं तुम्हें इस तरह जी, बात जी, करना जी। सिखा दूंगा जिस तरह मैं बात करता हूँ। देखो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जल्दी इसलिए सीसो अल्लाह ने बना दिया कि अल्लाह ने मुझे बात करना सिखाई। जैसे मूसा अलैहि सलाम थे ना, मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने कहा जाओ और फिरौन को दावत दो। उसने कहा, मूसा अलैहि सलाम ने कहा भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ अल्लाह, लेकिन आप मेरी जबान की गिरा खोल दें। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, राइट? वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी हाँ इल्मा, जी। राइट? सो वो क्या बोला उन्होंने? यही तो बोला ना उनसे, भैया मेरा जी, सीना जी। कुशादा कर दें, आप मेरी हिचकिचाहट हटा दें, सब कुछ कर दें। तो you will become an excellent storyteller inshallah, but you have to follow इंशाल्लाह। those guidelines, ठीक है? Follow all of those things, ठीक है? And जी, जी। inshallah you will go at top places। क्या that was my role basically, whether it is like, अगर वो पूछे सीम आर्किटेक्चर डिजाइन, सीम के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है? जो तुमसे बात कर रहा है शायद वो सीम के बारे में जानता हो, शायद नहीं जानता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन whatever the जी, जी। case is, you will be able to inshallah direct। बोलो भाई कि अगर वो पूछे कि कितना टाइम लगता है ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर और कंप्लाइंट होने में, बोले it takes time।
But with the power of data science, the reason that I got interested in computational intelligence and AI is because AI is being infused everywhere, right? So we can use the power of computational intelligence and AI in R&D and engineering processes, in innovation and digital transformation, in product design and development, and outsource, in manufacturing engineering, basically in supply chain and quality assessments. You can think about any vertical where machine learning, deep learning, and AI can be used, right? So my goal, inshallah, would be, don't say inshallah, my goal would be that if given the opportunity, then I can certainly play my part, and I would like to certainly recommend and maximum things that we should do in terms of securing whatever the things are. As a cybersecurity analyst, I have a keen eye for finding vulnerabilities. I have a keen eye for processes and procedures. Okay, so I can certainly do all of these things. मैं ये कर सकता हूँ. Okay, so that sums up your whole असिस्टेड इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, वो किस तरह असिस्ट किया? वो इंटरनल ऑडिटर्स आते थे, हम उनकी हेल्प करते थे जो भी उनको ऑडिट करना होता था. एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते थे, हम उनकी हेल्प करते थे, उनको एविडेंस चाहिए होता था, लिएजॉन करना होता था, हम सब उनको करवा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे. ठीक है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम फंसो और बात करो. क्रिएट स्क्रिप्ट्स टू चेक कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. बोलो भाई मुझे ओपन सोर्स टूल्स आते हैं, मैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसको यूज करते हुए अगर किसी सिस्टम की हार्डनिंग करनी है, if someone wants to check if the system, Windows or Linux or Mac or whatever the case is, if it is secure and compliant with respect to CIS requirements and guidelines, I can create a script and get the XML data and run it and make sure that it is secure and compliant, right? As per the requirements or not. Does it meet all the requirements? What kind of protocols are open? What kind of protocols are turned off, so on and so forth, right? What kind of services are running? Should we disable these services? This is how I used to create the recommendation reports. राइट, अगेन बहुत आसान है. आगे मेरे एसके का लेक्चर्स आ रहे हैं, तुम लोग सब कर लोगे. ठीक है, ठीक है. शुरू के तो मैं इकराम जैसे 6 महीने बैठा हुआ है, तो इस तरह तो तुम शुरू के 6 महीने तुम्हारे ऐसे ही गुजर जाएंगे, मगर उसमें तुमने पढ़ने में गुजारना है. जी जी इंशाल्लाह. ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा ये. ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर फायरवॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस, नाफे, लिनक्स, पोस्टमैन, डेटा साइंस टूल्स, he's not going to ask you any of those things. If he does, say how CIS is the Center of Internet Security top 20 controls. Any organization who complies with these controls, any solution, any organization, any application, they can be secure and compliant. I can say with reasonable assurance that they will be secure and compliant. Nothing is 100% secure. Anyone can find a zero-day vulnerability, but I can say with reasonable assurance that they will be compliant. ठीक है, तो ये तुमने उनसे बात करनी है, because there is no such thing as 100% security. वो नहीं. ठीक है, सिर्फ अल्लाह ऐसे काम करते हैं जो 100% सिक्योर होते हैं. बाकी क्योंकि वो अल्लाह अल मुसव्विर, द आर्टिस्ट. ठीक है, तो अल्लाह ताला जो चीज बनाते हैं ना, वो ऐसी होती है कि उसमें कोई खामी नहीं होती. राइट, तो अल्लाह ताला की जो प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारे ऊपर, वो जो है ना बेसिकली बड़े स्ट्रिक्ट हैं और कंप्लाइंट हैं, और वो जो है ना अल्लाह ताला की भी अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और सब रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके हिसाब से अल्लाह ताला पूरी कायनात को चला रहे हैं. राइट, ठीक है, तो वो सब चीज़ें. नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज इतना नहीं पूछेगा, बोला हाँ ISP था, काम किया, सीखा, बहुत कुछ किया, सब कुछ किया. ठीक है, इसके बाद कमेंट्री में तुमने क्या पढ़ा? बोलना भाई मेरा बहुत शौक है कि मैं सिस्टम्स को एनालाइज करूं, उनके अंदर जो APTs होते हैं. बिल्कुल इमेजिन करो, बोलो देखो इमेजिन करो कि तुम लोग जो है ना कंपनीज में सर्विसेज देते हो, BMW, ऑल्टन या वट एवर, ऑल्टन जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रही है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और वहां एक ऐसा APT आता है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, जो कि एक गाड़ी में नहीं, तमाम गाड़ियां सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना, उनको इम्पैक्टेड कर दे. ठीक है, तो हम ऐसा क्या सोल्यूशन बना सकते हैं कि हम उसको सिक्योर एंड कंप्लायंट करें. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू वर्क ऑन. दैट इज माय इंटरेस्ट, राइट? नॉट ओनली फाइंड द vulnerabilities of the operating system running on the car, on the protocols, but also how can we create a shell around a security shell around the operating system. This is a challenge, but that's where we have to do, and this is where we can use the power of machine learning, deep learning, and AI to get the work done, right? So ये तुमने बात करनी है. ट्रेनिंग्स के बारे में बताना है, बोलना भाई ट्रेनिंग्स हैं, बाकी मैं और भी ले रहा हूँ. I keep on investing in myself. I keep on learning new things because cyber security is such a dynamic discipline. You have to keep on updating yourself, right? So I keep on doing that.
बोलना बाकी भाई, if given the opportunity obviously I can learn German language, और जर्मन लैंग्वेज में तुम सीख लो यू नो किस तरह से थैंक यू और वो किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, जर्मन इंग्लिश टू जर्मन, राइट। सो अगर हम बोलें थैंक यू, Danke. तो बोलो danke, राइट। danke इसी तरह तुम्हें बोलना है, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, राइट। Danke. फॉर, thank you for your time. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Zeit, right? Zeit. तो इस तरह तुमने बोलना है, सीख लो, thank you for your time, ठीक है। बोलना, that's the only thing I've learned in German right now, but I'm very enthusiastic about learning new languages, right? And if given the opportunity again, I'll be able to master the German language within 9 to 12 months time. बस खत्म, that's it, ठीक है। So ये तुम्हारा इंटरव्यू है, जाओ अल्लाह का नाम लेके जाओ, लेकिन ये सीख लेना, थैंक यू फॉर योर टाइम, तो इसको तुम बोलोगे Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Zeit, right? तो ये तुम अच्छी तरह से सीख लेना ताकि तुमसे गलती ना हो। मतलब भाई मैंने सीखा है, I'm trying, I'm not perfect but I'm trying, ठीक है। So be happy, be in a good mood, be relaxed before doing this, be in wudu करके बैठना, अल्लाह से मांग के बैठना, अल्लाह आपने मुझे पहले जॉब दी 40,000 पाउंड की, अब आप मुझे ये दे रहे हैं, अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमाए, ठीक है। सही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। बाकी तुम खुद डॉक्टर शाह रहमुल्लाह के शागिर्द हो, तो बस दुआ करो, और जितना तुमने उनसे दीन सीखा है अल्लाह ताला आसानी के मामला फरमाए इंशाल्लाह, ठीक है। आमीन। बस यही तुम्हारे इंटरव्यू की तैयारी है, बाकी तुमसे कोई इतनी चीज़ें नहीं पूछेगा, तुम्हारे सीवी में इतनी कोई चीज़ें नहीं है, एक सिंपल सीवी है तुम्हारा, सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। जाओ इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला खैर के मामलात फरमाए। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कि तुम ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं भी नमाज पेशा की पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं खुसूसी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए और तुम ज़रूर इंशाल्लाह इसको अच्छे नंबर से पास करो और तुम्हारा हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। ठीक है, ठीक है फैसल भाई, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं ये पॉज करता हूँ और तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।